Assalamualaikum. Hello everyone, how are you? Welcome back to our channel, Crick Gossips. Thank you so much for watching so far. If you are following for the first time, just an FYI, we are both husband and wife, and we both love cricket. And we decided we'll just start a channel that we will talk about uh, anything related to Pakistani cricket or USA cricket teams, and of course, any main big events. Thank you so much for liking our channel, and we appreciate all the information that you post. We appreciate everything that you've been giving us in terms of criticism or anything that we need to do better. So we're very happy. अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे दैट विल बी ग्रेट. Again, हम लोगों के ये व्यूज़ हैं, these are our views, these are our personal views. We are not professionals, and that's why it's called Crick Gossips. So let's start. हमने कहा था कि लास्ट टाइम हम लोग इंग्लैंड पाकिस्तान मैच से पहले रिव्यू देंगे, बट वी वर नॉट एबल टू डू दैट. बट अब इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच हो गया और पाकिस्तान दूसरा मैच हार गया है वर्ल्ड कप टीम के अनाउंसमेंट के बाद. उन्होंने कुछ टीम में प्लेयर्स इंक्लूड किए हैं. मैंने कहा था कि साइम अयूब की एक ही टेक्निक है, लेग में मारता है, जब मिस टाइम हो तो वो कैच हो जाके आउट हो जाएगा, और वही हुआ. साइम अयूब ने फर्स्ट मैच में यही किया, उसने लेग में शॉट खेली और वो कैच हुआ और वो आउट हो गया. सेम गोज़ विद आज़म खान. ही इज़ नॉट consistent. He only did like 30 or 30 score or 40 score in Ireland match, and उसके बाद वो कंसिस्टेंट ही नहीं है, ना परफॉर्म कर रहा है ना कुछ. ऐसे हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो बहुत हर्ट हो रहा है, और सिर्फ हमारी टीम डिपेंडेंट है बाबर आजम और रिजवान पे. दैट्स इट. और हमारी बॉलिंग लाइनअप जो पाकिस्तान के और इंग्लैंड के मैच में जो बॉलिंग की है ना, उसमें भी स्टार्टिंग में काफ़ी मार पड़ी है हम पाकिस्तानी टीम को, और एंड पे आकर उन्होंने बेसिकली आफ्टर 13 overs they quite managed to stop the score and they took some better wickets. And again Shaheen Shah Afridi ने आखिर में आके विकेट्स ली हैं. That's good. मोहम्मद आमिर, I think he's out of form. He didn't get anything. Only he bowls like 4 overs, और उसके बाद उसने कितना स्कोर खाया उस पर. So same goes with Haris Rao. He came back after a long time, और वही एक ओवर में 2 छक्के 3 छक्के, वही जैसे 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में किया हो रहा था. उसके बाद उसने टी20 मैचेस खेले. जब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बाद, जब न्यूजीलैंड में भी उसको मार पड़ी काफ़ी. ही जॉइंड या टी20 सीरीज़ ज्वाइन की. फिर इसने आई मीन द परफॉर्मेंस इज नॉट दैट मच. न्यूजीलैंड में नहीं था सीरीज में. न्यूजीलैंड के ये जो साल पिछले साल के एंड में आखिर उसमें नहीं था. नो ही वाजंट देयर. आई थॉट ही वाज. नो ही वाज नॉट 100% देयर. उसको उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में उसने परफॉर्म करने से मना कर दिया था टेस्ट क्रिकेट से. Yeah, so but they took him out of the team for a bit. So in the New Zealand series he only played one, but he was still injured. He did not really perform. he wasn't there. So He wasn't there. obviously you cannot base it off of his injury, and he's just coming out of Yeah, injury. but still, World Cup is around the corner. ठीक है, We should आपकी be. बात बिल्कुल सही है कि वर्ल्ड कप अराउंड द So कॉर्नर है. we love cricket. We are Pakistani, and we, even though our national game is hockey, and we love cricket. If Pakistan team win or lose, we always support them, and we are like, I mean, क्या करें अब. कुछ चीज़ें हैं जो जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है. क्या करें अब. हम क्या कर सकते हैं. हमने देखना है क्रिकेट मैच, हमने अपने प्लेयर्स को देखना है कि खेलते हुए, तो अब क्या कर सकते हैं हम. सो या लेकिन आई मीन स्टिल आई विल विश देम बेस्ट ऑफ लक कि वो अच्छा परफॉर्म करें, और आगे अभी परसों 28 को मैच है. अच्छा चलो, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, मुझे सिर्फ सही बताना. आपने साइम अयूब को कहा कि कहानी, वैसे मैंने अपनी ओपिनियन दी. मतलब मेरा मतलब यही है ना मैं कौन कहने वाला बनता हूँ भाई. वो प्लेयर क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, मैं तो बैठ के ओपिनियन दे रहा हूँ अपनी. They are professional. I'm not professional. I played cricket. I know how to see a batsman hitting shots like offside, leg side, like all around the ground. So yeah.
ठीक है, जस्ट एन एफवाईआई कि हमारे क्रिटिसिज्म को इस तरह ना समझिएगा कि Yeah, but yeah. पत्थर की लकीर Yes, है, I mean, आपने we are फॉलो just करनी है। yeah. ये तो But हर कोई our team is. I mean, we love our team. We love our players. आप अगर किसी को मोहब्बत करते हो चाहे वो Yeah, अपना we बंदा love ही क्यों ना हो, we love our players. We love. I mean, I like Saim Ayub. I like Azam Khan. He performs. I mean, he did perform well in last two matches of New Zealand in Pakistan where we won them. No, in Ireland. Sorry, my bad. Irish series. So yeah. उसमें भी उसने एक मैच एक आधे मैच में किया उसने और वो पाकिस्तान इनिंग्स खेली एंड से दो मैचेस एंड किए हैं यप लेकिन बात वहीं आ जाती है कि अगर आप किसी टीम से या किसी मुल्क से या किसी अपने से मोहब्बत करते हो तो आप उनको उनकी बेहतरी के लिए क्रिटिसिज्म देते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्थर की लकीर है। हमें काफ़ी चीज़ें नहीं पता है कि उनके बैक एंड पे क्या चल रहा है, कि टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है, किस तरह सोच रही है। Shadab Khan not performing well, and I think they also announced the team for World Cup and they included Hassan Ali. I mean, I don't think he should be the. No, he's not. He's in reserve. He's in reserves, right? They updated the reserve? I think he's in the last I reserves. saw that they did not update any reserve. So why are people talking about Hassan Ali He's in not the even squad, in the there. squad No, he's or not. something like that? Have you not looked at their World Cup squad? No. Okay, and that just goes to show that I am the one who does the research. So let's just backtrack before we get into the World Cup squad because हम लोगों ने कुछ चीज़ें इस सीरीज़ में बात करनी है। So here's my question to you. आप कहते हो कि साइम अयूब जो नहीं एक शॉट खेलता है और सबने को ने हर टीम ने एक साइड पे खेलता है हर टीम ने उसको जज कर लिया है। उसको जज कर लिया है। तो here's my question. We have Gary Christian on the team. He just joined the team. Doesn't matter if he joined. He just joined the team. What he can do? He can only give advices. Did you see the press conference of? Did you hear everything of Fakhar Zaman? What he said that we talked to him. He's like giving suggestions to us. But he said that मैं अभी उसको नहीं सुनूंगा, अभी वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के बाद मैं उसको सुनूंगा, मैं अपनी टेक्निक से खेलूंगा। फखर जमान ने ये कहा था। ने अपने बारे में बोला है। हाँ, तो अभी और भी कोई अभी नहीं बोला ना। right. You cannot but assume कि no coach can come. सबके बारे में बोल रहा है। No other coach can come and join the team like 3 days before the World Cup and give their opinion and they will listen to them, to the coaches. No, that's not good. This is why we're making this channel. Yeah. So नहीं, लेकिन ठीक है, आप कहते हो कि फ़खर ज़मान ने अपने बारे में बोला, ठीक है। गैरी क्रिस्टियन ने अभी ज्वाइन किया है, बट आई एम प्रीटी श्योर ही इज़ फॉलोइंग every single person that is on the team. He's been taking advices from the people who've been part of the team. अब अगर हमारी मैनेजमेंट में उन्होंने एज ए बैटिंग कोच या आप कह लें कि सिलेक्शन कमेटी में मोहम्मद यूसुफ को रखा हुआ है, Why is he not working on Saim Ayub? वो क्यों नहीं काम कर रहा? वो क्यों नहीं उसको कह रहा कि भाई तुम अपनी नई शॉट्स डेवलप करो? टाइम बहुत थोड़ा है, आई अंडरस्टैंड। साइम अयूब अपनी गेम खेलता जा रहा है, लेकिन अब ये पॉइंट नहीं है कि आप बिल्कुल कहो कि भाई वही सेम रूटीन खेलते रहो। जब टीमें पिक करना शुरू कर देती हैं, देयर इज़ अ रीज़न व्हाई यू नीड टू स्टार्ट डेवलपिंग न्यू शॉट। वो उसने अभी तक नहीं किया। मे बी इट्स गोना टेक he needs practice to उसको थोड़ा पॉलिश करने का है कि अगर कोई अच्छा कोई बैटिंग कोच मिल जाए। मैं ये नहीं कहती कि इसको निकालें, नहीं इसको पॉलिश करो। he should be in the World Cup squad, जहाँ पे पाकिस्तान को लगता है कि यहाँ ये अपनी नेचुरल गेम खेल सकता है, तो उसको उस गेम में ज़रूर डालें। Or again, if there's any test match series coming up, he should be included so that absolutely. Test matches makes player, bowler, and batsman they're like that is going to take place after the World Cup. Yeah, I know. I'm just saying. Anyway, back to my question. आप सारा point लेके पता नहीं कहाँ चले जाते हो। ठीक है, आपने कहा कि सिर्फ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो नहीं है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। फ़खर ज़मान ने सेकेंड T20 मैच में उसने एक तो क्लियर कर दिया कि वो 4th पोजीशन में खेलेगा और कहता है कि मैं वहाँ पे सेट हो गया हूँ और वहाँ खेलेगा। और सेकेंडली
we shouldn't So he's get, performing. we shouldn't forget about Ahmad Wasim. He's He actually did coming well. back in form. He's bowling well. He did the first breakthrough in Pakistan versus England match, the second T20, and he scored as well, and he stopped the runs while bowling. इसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है. And उसने रन रेट उसने definitely थोड़ा नीचे की है उसमें मैच हमारा में. हाँ उसने ज़रा बेहतर किया. बेहतर किया. पर बॉलिंग अटैक वाकई में वी नीड टू वर्क ऑन इट. लेकिन Yeah, हम we रिस्ट्रिक्ट used to कर be रहे the हैं. used to be the world's best bowling attack, Pakistan. That was not some in the 90s. We are not going back Not in to the the 90s, 90s. early 2000, Even late in early 2000s, 2000s, in mid it wasn't 2000s, too much in of it. ICC Champions Trophy 2017. This was only possible when Coach Boomer was part of the Secondly, team. I was, I was a big cricket fan in mid 90s, right? In when there was like 1999 World Cup. मैं वसीम अकरम का बहुत बड़ा फ़ैन था. मैं उसकी कैप्टनसी का बहुत बड़ा फ़ैन था. जो उस टाइम पे जो बैटिंग स्ट्रेटजी थी ना पाकिस्तान की, जिस तरह की शॉट सिलेक्शन थी प्लेयर्स की, आमिर सेल हो गया, सईद अनवर हो गया, मोइन खान हो गया, वो सब चीज़ें आजकल के जो दूसरी टीम के प्लेयर्स हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं. मगर हमारी पाकिस्तान की टीम, दे आर प्लेइंग देयर ओन गेम. आई डोंट सी दोस काइंड ऑफ शॉट सिलेक्शन इन देम. बट although I will not, I'm not talking about Babar Azam, I'm not talking about Mohammad Rizwan, all other players. So I just wanted to bring this. So yeah, carry on. ठीक है, लेकिन उस ज़माने में रूल्स भी काफ़ी डिफरेंट थे, गेम भी थे, डिफरेंट थी. but no other team batted like used to bat like Pakistani team. Yeah, yet even back in those days, we did Saeed not Anwar was win one of the best batsmen, and he was we like, did not win as much as we should have. But anyway, that's beside the point. जो अभी की बात है हम वो करते हैं. इंग्लैंड के जो मैच में जो भी हुआ, बहुत बुरी तरीके से तो नहीं हारे, लेकिन 23 runs is very terrible for our team because we can take it to the last yeah, minute. due to the loss of wickets, the score went down, like run rate थोड़ा नीचे चला गया था. और उसकी उनमें वजह से थोड़ा सिर्फ struggle करना पड़ा. दो प्लेयर्स ने बहुत, अगर बाबर आजम 20-30 कर लेता तो आज मैच कहीं और पे होता. हाँ, अगर वो खड़े रहते, इवन कि अगर साइम अयूब चलो 20-25 कर लेता तो मैच कहीं और पे होता. तो I mean let's see what they do in उसके अलावा 30-20 मोहम्मद international. रिजवान भी अगर थोड़ा, And you know what, बर्मिंघम कहाँ पे होता मैच? so I really do think कि जो अभी जो मैच गुजरा है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को देखनी होगी, क्योंकि इंग्लैंड भी अपनी बेस्ट टीम लेकर आ रही है. और दिस इज़ लाइक अ सेकंड चांस trying to beat England at a T20 match after the last World Cup because we were in the finals. We could have done much better in terms of bowling, and I am with him on that. There are certain things that I just don't have the same opinion as. Yeah, I was right. The second T20 held at Birmingham. Birmingham. Yeah, so, Edgbaston, Birmingham. And it was like Pakistani's home ground, and it was like all Pakistani crowd, and I didn't see England people तो there. अच्छा मुझे सिर्फ ये They बताएं. were expecting more from Pakistani team, but let's see. Yeah. But let me ask you this. In our last video, we talked about mental pressure, mental stability when you're playing a game. पाकिस्तान प्लेयर्स की और हम पाकिस्तानियों की एक ये इशू है कि हम पैनिक करते हैं और we obviously underperform. We think that we take in too much pressure and we just choke, like literally choke. तो अब आपको लगता है कि इस गेम में हम लोगों ने चोक किया था? Because I think we did. Yeah, we did. I mean, There shouldn't be any experiment right now, but there is nothing we can do about that. उन्होंने जो स्क्वाड अनाउंस किया है हम उसके बारे में बात कर सकते हैं. एंड एज़ फार एज आई नो अभी तक उन्होंने स्क्वाड में रिज़र्व नहीं किए हैं. सो लेट्स लुक एट हु आवर स्क्वाड इज़ फॉर नाउ. So the World Cup T20 squad is Babar Azam leading the team with Haris Rauf, Abrar Ahmed, Azam Khan, Mohammad Amir, Saim Ayub, Usman Khan are included, but Hassan Ali is left out.
अच्छा, उसको हसन अली को निकाल दिया। No, we need the whole squad. That's not the whole squad though. Yeah, I told you he's not part of the team anymore. They let him go to play the county cricket. Okay, so now this is the whole squad. Go ahead. So Babar Azam captain, Azam Khan, Fakhr Zaman, Iftikhar Ahmed, Mohammad Rizwan, Saim Ayub, Usman Khan, all-rounders Imad Wasim, Shadab Khan, Abbas Afridi bowler, Abrar Ahmed, Haris Rauf, Mohammad Ahmed, Naseem Shah, Shaheen Shah Afridi. They're playing with too many pacers, in my opinion. Yeah. Yeah, because look at it. Yeah, I know. They're literally two spinners, and rest of them are pacers. Well, the two spinners are supposed to be all rounder, but Imad Wasim ki batting or even Shadab Khan ki batting in the last match wasn't up to the mark like we wanted it to be. We don't know how to get it eventually. बाकी जो बैट्समैन हैं उनमें से मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान और बाबर आजम हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं. बाकियों के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है. इफ्तिखार अहमद चल सकता है अगर उसका भी मेंटल लेवल बहुत अच्छा हो और उसको अगर थोड़ा ऊपर भेजा जाए. दैट्स माय ओपिनियन. As far as the bowling attack we have, so in New York there are only 2 matches of Pakistan. Yeah, versus Canada and India. So that pitch is actually Adelaide pitch or based off of Adelaide pitch. But since nobody played on that pitch as of yet, India will have the upper hand because they're right now in the USA getting ready for their warm-up match with Bangladesh. All right, let's come to the point. But anyway, that's the Pakistani squad for you. I think that they need to do a better job. We need to figure out at this point. We don't have any reserve, number one. Number two, I don't know if this squad includes the reserve. The leg but break this is ball. Usama Mir, sorry, Usama Mir. Usama Mir. Yeah, he should be He should included. be should be included because I mean उसने performance भी अच्छी की है, उसकी rhythm भी अच्छी है bowling की. Yeah, he should have been included. Abrar Ahmed है. Yeah, लेकिन इमरान अहमद ने मैच कोई नहीं खेला ना. He's a mystery spinner. उसामा मीर ने मैच खेला है. Yeah. So matches खेले हैं, and he performed in New Zealand series. But here's the question. हम लोगों को बैलेंस टीम लेके जानी जो आगे के लिए भी जाए. ठीक है ना. उसामा मीर को उनको रखना चाहिए था. I believe that. चलो वो रिजर्व पे रख लेते हैं. एक बैक हैंड पे बॉलर होना चाहिए था. रिजर्व नहीं अनाउंस किया. Instead of Azam Khan, I would prefer Haris. What's his name? The keeper. Mohammad Haris. Mohammad Haris should be there. Yeah. So I don't know. Well, this is our team. There's nothing we can do about it at this point in time. So do you want to talk about the other squad? Not right now, in the next video. And we will talk about Bangladesh versus USA, where first 2 matches won by USA and last match was like Bangladesh won They were all by 10 wickets. So the first two matches में ये है कि यूएसए की टीम ने बांग्लादेश को एज ए सीरीज दे वॉन. बांग्लादेश को हरा दिया वो भी लास्ट मिनट तक. लेकिन here's an interesting thing which I'm pretty sure you don't know. यूएसए की जो फर्स्ट 2 मैच उन्होंने खेले हैं उन्होंने वो टीम खेली है जो उनको पता है स्क्वाड वाली होगी. उनमें से वो लोग शामिल थे जिन्होंने परफॉर्म किया था. And most of them were international players who came to USA and are performing under USA brand now. So बांग्लादेश ने तो अपनी वही टीम खेलनी थी जो उनकी है, जिस पे उन्होंने काम करना है, जिसके साथ उन्होंने लेके चलना है. So in the last match that they won by 10 wickets, but USA won the series. That goes to show कि USA ठीक है यूएसए की टीम एज एन एसोसिएट टीम है, लेकिन वो अगर बिग टीम बांग्लादेश जैसी बिग टीम को हरा सकती देन दैट मीन्स वी हैव टू वॉच आउट फॉर इट. और वो क्योंकि यूएसए की टीम ये उनका होम टर्फ है. दे आर मोर फेमिलियर with the conditions here, especially when they are playing against Pakistan in Dallas. So Pakistani team needs to be पाकिस्तान का पहला मैच है यूएस के साथ वर्ल्ड कप का. So they're going to be performing in Dallas. For Pakistan, it's going to be brand new. उन्होंने कभी वहाँ पे कुछ नहीं खेला होगा और वो बिल्कुल अभी लिटरली मैचेस खेल के आ रहे होंगे.
So hopefully they have enough time to practice and get the ground condition right in Dallas, and we'll see how that goes. So Yeah. here's an interesting question for you. अगर पाकिस्तान और यूएसए का मैच होता है, आप किसको सपोर्ट करोगे? बिकॉज we're both Pakistan, we're both dual nationals. First Pakistani, then US. Really? Yeah. I'm a little in between. क्योंकि मेरा यहाँ I've been living in USA for a long time. I would love to give it to USA the benefit of the doubt, but I feel like that कि Pakistan team will outperform them only because they've been playing international cricket for so long और वो बड़ी टीम से खेल चुके हैं. However, USA को lightly नहीं लेना चाहिए. Yep, नहीं lightly लेना Especially with चाहिए. the squad that they have right now. Yep. So we'll see what happens in that term. Okay, there's one thing that I'm really not happy is the way ICC is handling the ticket and the media presence in regards to T20 World Cup. एक तो नंबर वन उन्होंने मैचेस रखे हैं सुबह के 10:30 बजे वीकडेज वीकेंड्स पे आप सुबह 10:30 बजे ज़रूर रखो, लेकिन वीकडेज पे in USA where people are working 8 to 4 job, I mean 8 a.m. to 4 p.m. type job, most of the people will not take off. ठीक है, आप अगर यहाँ नहीं USA में रहते हो, you don't know how things work here. You don't take off on random days. You have to get permission to take off days, right? We can't skip it either because number one, you have a lot of other responsibilities and priorities, and the way that ICC is handling with the ticketing is terrible. My personal experience, आप उनको contact करोगे, they have the worst customer service when it comes to trying to get something out of them. Like if I wanted to exchange a ticket, or if I wanted to return a ticket, if I had a question about a ticket, they don't get back to you right away. They take their sweet time, like 3 to 4 days, maybe even a week. They don't get back to you. That's not how a customer service is supposed to run in USA. In USA, if you are running a show, you should be focusing on the customer service very, very, very well. Because unlike other countries, customer service, people rely on the customer service. Secondly, ठीक है, आईसीसी के अपने रूल्स हैं कि दे डोंट रिटर्न एनी टिकट, दैट्स फाइन, बट आपके रूल्स में इतना होना चाहिए कि इफ समबडी हैज अ जेन्युइन इशू, they should expand the rules a little bit, because even if you have refundable tickets, there are certain things that they are not considering. So that's just something to look forward to maybe in the future. और लास्ट जो सबसे बड़ा फियास्को है, ticketing prices. I don't know in what, if you are trying to make cricket available to the local public, especially to the Americans, American born, even the American born Desi, आप किसी भी American born South Asian को कहेंगे ना कि आप cricket देखने आए, तो the only thing that you will for most places, for most of the people I grew up with, they don't give a crap about cricket because they didn't grow up with that. वो basketball, NFL, tennis, and all the other sports, they grew up with that. They would rather play those games, and they would rather buy expensive tickets for those games. और वो क्योंकि popular games है, even कि not the American football but soccer is huge in USA. ठीक है, उनको इस्टेब्लिश करने में बहुत टाइम लगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके लिए जनरल पब्लिक के लिए टिकट्स चुनिए इतनी महंगी कर दो, और सिर्फ आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो जो साउथ एशियन है, जो फर्स्ट जनरेशन अमेरिकन है, उनको अट्रैक्ट कर रहे हो. यू आर नॉट अट्रैक्टिंग अ सेकंड जनरेशन अमेरिकन. इवन द फर्स्ट जनरेशन अमेरिकन, दे आर नॉट विलिंग टू पे $100 for a ticket. And then if you're doing it at 10:30 a.m., that means they have to take off from work to go watch to watch a match. Most of the immigrants are not as rich as what people are thinking it to be. In order to survive in USA, there are so many different priorities that are set in place. And I'm not going to talk about those because that's just a different topic to talk about.
But ICC needs to think of how to attract non-playing cricket fans. And if you want to attract them, make the prices low. Okay, आप अगर साउथ एशियन के अलावा दूसरी भी अगर टिकट्स लुकअप करोगे तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव. द ओनली इनएक्सपेंसिव टिकट्स आर इन वेस्ट इंडीज, and that's not, they should not have done that in USA. आप एक तो टैक्सेस दे रहे हो ऊपर से, और फिर on top of that you are making the tickets too expensive. No one wants to watch that. No one wants to come to the games just because you think, क्योंकि मोस्टली जो आपकी इस वक्त है ना वो साउथ एशियन को इन्होंने किया है, और मोस्टली उन लोगों के लिए क्या है जो घर में बैठ के देखेंगे, वो भी साउथ एशिया में या एशियन कंट्रीज़ में, आउट ऑफ द स्टेट्स. That's not helpful. And if you want cricket to flourish in America, next time you need to do better. You need to bring the prices down, because it's not going to work for the general public here. So that's my concern. And then on top of that, the media publish. Do you know last 3 months they haven't even like reached out to proper media outlets to talk about where the crickets are taking place. Like every news channel that I have seen, they don't know ABC of cricket. They think it's a 5-day. The test match is cricket, by the way. Really? I'm not kidding. Everywhere, because I grew up in the States for 20 years now. I realized कि भी जब भी मैं cricket के बारे में बात करती थी, they thought that it was a test match. Do you know what that means? Yeah. तो obviously वो कहते हैं ये 5 days की cricket कौन देखेगा? But so no one was really attracted to that idea. You need to make them aware that it's not just 5 days cricket. So if you're spreading the word about cricket, maybe have a specialist tell them what a cricket is, rather than having normal newscaster talking about cricket. And then if you want to spread the news, go reach out to the national, like ESPN. They're not even covering cricket World Cup. Why? They should cover. They should cover it, but they're not doing it. ESPN is They India's. just made a loss. USA Cricket, and they just made a lot. The cricket board. They will learn from it. They have to learn from it, because honestly, this was their chance to attract ESPN. And I feel like that we need to do better next time. ICC needs to do better next time. USA Cricket Board needs to do better next time if they're gonna have another, even if we have another next time. So let's see, in 2 years there will be Olympics, and hopefully by then they have fixed all the mistakes they made this time around. And hopefully next time there's more media coverage about cricket, because they started promoting cricket in the month of May only. Anyways, thank you for watching our video, and hopefully you enjoyed it. This time it's a little better than We tried our best, so we will improve accordingly. yeah, and this is our more natural self, Yeah. which we were hoping that you would love. So thank you for watching our video. Don't forget to share, subscribe, and like our channel. Yeah. Thank you so much, and see you next time. Bye. Bye. Have a good one. Take care. I'm gonna cut that part. Please stop. Don't go out of script. And we will record the videos and we will show it to you guys. Oh no, for that we have to get permission from USA That's- Cricket first. Okay. We'll see. Yeah, we'll see about that.